UFC 284 is round the corner. Islam Makhachev पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की लड़ाई के लिए जा रहे हैं अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कोनोस्की, फेदरवेट चैंप वर्सेस लाइटवेट चैंप। साथ ही में को-मेन में हमारे साथ एक फेदरवेट डिवीजन की फाइट होने वाली है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर्स। एंड एक बहुत बढ़िया कार्ड यूएफसी 284 हमारे पास है, तो मजा आने वाला है इस पूरे कार्ड के। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमए इंग्लिश में, हमारी इस पॉडकास्ट जिसमें हम इंडियन एमएमए सीन और एमएमए ऑल अराउंड द वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। मेरे दोस्त और मेरे को होस्ट, शॉर्ट हेयर एंड लैंकी फेलो डॉनी बोन्स हैं। एंड डॉनी a very good columnist at One Dojo. Donny, first of all, thank you for joining. How are you? Yes, I mean, I'm fine. I hope you were not. I really wish you weren't acting like an asshole the whole week. But yeah, I'm glad that we are finally doing this. So, and you forgot that the main event of this fight card, 280 UFC 284, it features the pound for pound number one and pound for pound number two. I don't believe that. चलो लेकिन फिर भी Yeah. Why you don't believe that? Please tell me why you don't believe that. even Habib never was pound for pound number 2, let alone this stupid guy from Dagestan. We will leave that aside for a moment. We will Just leave that aside for a moment, but I don't know why uh, you just hitting on them. we will let that aside for a moment. But coming to the main event, UFC 284 इस बार पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। पर्थ Mm. जो बर्थ Yeah, प्लेस है फॉर वन पाउंड फॉर पाउंड एमएमए यूएफसी चैंपियन, फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कोनोस्की। एंड डाउन यूएफसी गोज डाउन अंडर, बहुत ही बढ़िया टैगलाइन है। यूएफसी 284 में लाइटवेट चैंपियन के लिए जा रहे हैं अलेक्जेंडर वोल्कोनोव्स्की इंस्टेड ऑफ he's डिफेंडिंग his थ्रोन एट फेदरवेट। और फेदरवेट की ही हमें एक को मेन इवेंट पे फाइट देखने को मिली जो कि नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए होगी अगेंस्ट सर्जिंग कंटेंडर, सॉरी सीजन वेटरन जॉश एमेट। 5 फाइट विन स्ट्रीक पर हैं। mhm. एंड उनके सामने है दी Yeah, वेरी yeah. एक्साइटिंग दी वेरी एक्साइटिंग एल पेंटेरा याइर रोड्रिगेज। बहुत ही मजा आने वाला है इस फाइट में। एंड coming from the odd one to the lightweight, picking the odd one out, the lightweight champion जिनके अगेंस्ट फाइट होने वाला है मेन इवेंट का, जिनके टाइटल के लिए फाइट होने वाला है। Mm. मेरा भी डेना वाइट मोमेंट हो गया है, मैं नाम भूल गया था अभी। इस्लाम माकाचेव, इस्लाम माकाचेव, थोड़ा आगे आजा मेरे भाई, Mm. कम I'm coming. फॉरवर्ड। Yeah, yeah. Very better. या गुड। Okay. इस्लाम माकाचेव, जैसा कि डॉनी ने शुरुआत में कहा, why don't I consider him as number 1, number 2 pound for pound? Because lightweight division में he is not even number 2, let alone 1, let alone champion मेरी नजरों में। I believe so. Just because of Dana White's privileges उनको टाइटल शॉट मिला है, just because of nobody wants to fight him, उन्हें एक टाइटल शॉट मिल गया just because of Ali Ali अब्दुल अजीज, that terrorist snitch, उनकी वजह से उनको एक फाइट मिल गई है। एंड he has become a champion by defeating a very seasoned contender, Charles Oliveira, no doubt in that. वो फाइट जीते थे, एवरीथिंग वाज गुड, बट स्टिल नंबर टॉप 5 छोड़ो, टॉप 10 में भी एक ही बंदे के साथ उन्होंने फाइट किया है, एंड दैट गाय इज डैन हुकर, जो फेदरवेट डिवीजन में जाके वापस आ चुके हैं। नॉट टू नॉट टू डिसरिस्पेक्ट डैन हुकर, वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर, बट टॉप 10 में किसी के साथ फाइट नहीं किया। ही शुड हैव फॉट एटलीस्ट बेनिल दारियुश जिससे कोई फाइट करना नहीं चाह रहा है, एंड इस्लाम माखाची जिसके साथ कोई फाइट करना चाह रहा है। इन दोनों की फाइट कराओ। दोनों दोनों फाइटर्स अली अब्दुल अजीज के बैनर के नीचे हैं, की मैनेजमेंट के नीचे हैं, डोमिनेंस एमएमए के नीचे हैं। दे शुड हैव मेड दिस फाइट लॉन्ग अगो, लास्ट ईयर। आरडीए फाइट नहीं कर रहा है, अरे तुम इससे फाइट करो, लेकिन नहीं, ही वाज वेटिंग फॉर द टाइटल शॉट एंड ही गॉट इट। वेल डिजर्व्ड, कांग्रेचुलेशंस इस्लाम माखाचे, हमारे चैंपियन हैं। Now I think this all answers why I do not consider him number 1 pound for pound, let alone the lightweight champ. Go ahead, Tony. Wow, man, you just talk some of the most preposterous shit that I've ever heard. This is the kind of talk that's gonna get you beat up, you know. What मार खाएगा तू? Even Habib never fought To some top fight? 5 contenders.
Even Habib never fought some top five contenders. Yes, but he defended his title against each and every Ah, contender he faced kudos him. to him. Kudos to him. He defended three times. And not saying I'm a dominance MMA hater. I'm a Abdel Aziz hater. But तीन बार चार बार अपनी बेल्ट डिफेंड अगर कर दें इस्लाम, I'll consider him the champion and uh, one of the greats of lightweight division. Definitely, I can say See, that. see, okay, I fine. So used to hate Kamaru what, Usman a what, lot. मुझे what do कमारू उस्मान सबसे बेकार आदमी लगता था एंड कमिंग फ्रॉम अ गाय जो कोलबी फैन है, कोलबी कविंगटन फैन, तो obviously I used to hate Kamaru Usman, लेकिन now that guy has my respect. Okay, I understand that. That is fair enough because nobody really liked Kamaru Usman. Everybody agreed with Colby. Everybody agreed with him when he called him Snoozman. But the thing about Islam is that nobody really wanted to fight him. He kept on calling guys out, but nobody really wanted to fight him. So what was he supposed to do, man? You tell me. What was he supposed to do? So he fought whoever like Call he. Ali Abdelaziz and fight Beneil Dariush. So bro, at the time when Benil was supposed to fight Islam, he got injured. So whose fault is that? हाँ? Islam ते- Makhachev. तेरा दिमाग खराब है गया है क्या? पागल पागलू जैसी बातें कर रहा है. Just fucking around, bro. Go ahead with your point. See, I am never saying that मुझे Okay. इस्लाम हाँ. मखाचिव चिढ़ है या ये है, लेकिन he has never earned, he didn't earn it, just See, because of Dana White privileges. Ali Abdelaziz is uh, what you say, उनका जो he is always into Dana White's pants. That's why he got it. Simply put it. you fucking around like this is gonna be one of the reasons why you get fucked later, man. Please don't do that. पागलू जैसी बातें कर रहा है. Just think properly. Think just why before you talk. I understand you're not a big fan of their style. I understand you're not a big fan of Ali. You're not a big fan of dominance. You're not a big fan of. Please don't say that I don't like the style. I do not like wrestling and I hate wrestling. Two different things. I I said you are not a fan. I didn't say you hate. Okay, go ahead. Huh? Go ahead. See, don't talk crazy shit like that. Do, this is the kind of talk that is gonna get you beat up. No problem. जैसी बातें मत कर. But No yeah, problem. coming to the serious point, you just try listening to me and just what I said. See, Go ahead. Go ahead. it was Benil who got injured, so he can't really do anything about that. Even Benil accepted his fate, and now that he's recovered, he's preparing to fight against Charles Oliveira, which is I believe like a fair opportunity for Benil to cement his position to get that number one title contender. But he's facing a guy who's really like not just a fan favorite, but very good guy with both his hands and his feet. I feel like this is gonna be a very exciting matchup. But yeah, at the end of the day, despite all that, Islam Makhachev beat Charles Oliveira fair and square and in dominant fashion. Agreed. Agreed. No, no, hold on, let me finish. Islam beat the guy who beat all of the guys who were the cream of the crop in the lightweight division, who have been the cream of the crop for so many years in the lightweight division. Granted, Chandler came from Bellator, but Chandler is also one of the best lightweights in the world. Still is. He still is. I won't even use the word was. So Charles beat all of those guys, and Islam came and he shook and he beat him fair and square. And at least you have to give him that acknowledgement. If you beat the champ, then you are the champ. And now he's trying to prove a point. He's going to Australia, to enemy territory to defend Props to him for doing that. Props to him for doing that. to him for sure. Seriously, I mean, with any other champion, I don't think so. They would want to do that. Usman also he's fighting in London because he doesn't have any other choice but to fight Leon in London. But the thing is that Islam is not doing that. And yeah, Ali could have made, like you said earlier, Ali could have made them wait. But the thing is that why should Islam wait for a title shot when he has been doing whatever he has fought each and every guy that
that came to face him in that cage. And granted, man, each and every guy, like, they got injured, they face this kind of Shut the situation. fuck up. Yes, you. Huh. So yeah, Benil Dariush had to pull out of the fight, and then because of some problems, even Rio also had to pull out of the fight. So he didn't really have an opponent, and that was when Bobby Green stepped up to the plate. And let's be honest, Bobby Green wasn't really up. He couldn't really match Islam Makhachev. So yeah, that was that, and then With Islam. the utmost respect to Bobby Green, he couldn't even handle the jocks of any of those top 15 fighter, let alone top 5 or being the champion. You go from Bobby Green straight towards a title fight. My God. Go ahead. Go ahead with I, your Mr. Dominance guy. I know, I know. What can I say? Nobody else wanted to fight him at that moment of time. Each of the top five and each of the like top seven guys, they had their own respective opponents and their own respective fights to prepare for. So how you tell me, man? The matchmaker would have been having a nightmare at that moment of time. Hmm? It's Easy not peasy. Easy this guy. peasy Dustin Poirier. Easy peasy. Easy peasy. Justin Gaethje. Easy peasy Benil Dariush. Chalo Benil Dariush injured hai. Yeah, easy Justin peasy, Ga- just Justin but Gaethje. but Justin Gaethje is fighting in 1 month's time. In 1 month's time, UFC 285 he's going to fight. He could have fought earlier. He got injured around October, right. November last year. So why don't you remind me when did Justin Gaethje fought last, and why don't you remind me when did Makhachev fought last? Hmm? Please remind Makachev me. Makachev fought in October 2022. So And and that go ahead, go and ahead. who was Gaethje supposed to fight at that time? Gaethje was not injured at that time. Gaethje injured नहीं था उस time पे. I'm sorry. Uh, February 26 को fight किया बॉबी ग्रीन के against. Mm-hmm. अक्टूबर में fight करता है for the lightweight title. Bobby Green, who couldn't even be top 15, 165. अच्छा, लेकिन it was a late notice fight. Who pulled out? RDA? Not Yeah, sure. no, no, I it think was RDA pulled out. was it RDA or was it this guy? Benil. It was Benil, I think. Yeah, it was Ah, Benil. okay, okay. Benil. Mm. Benil Dariush pulled out Yeah, of the fight. yeah. So you go from see इनका पूरा करियर मैं आपके सामने रख देता हूँ. Mm-hmm. Arman Sarukian, great fighter, but Yeah. debut fight in UFC. Okay, Davy Mm. Ramos. एक second, Davy Ramos was a previous world champion in UFC. Yeah. Okay, Drew Yeah. Dober, 3-time world champion. Thiago Moises, 5-time world champion. Then Dan Hooker, my God, my favorite fighter. My favorite fighter. Dan Hooker fought him. Bobby Green, my goodness. Lightweight champ, featherweight champ, everything. Champion, champion. At the end, he fights for the title. Deserving guy, the most deserving guy in lightweight division to fight for the title. And I rest my case. I rest my case. The best fighter that could have fought for the belt, Islam Makhachev and Bro, Charles Oliveira. all of his opponents, they had problems of their own and they couldn't make it to the fight. What is a guy supposed to do? To मेरे को ये बस बता. Should he wait for all of them to get their shit sorted out? He has his own shit to sort out, right? Okay. So Okay. आपका बोलने का मतलब है कि कोई फाइट नहीं करना चाह रहा Huh? क्योंकि So take the Islam one. Makhachev is someone out of the blue. It's someone out of the blue जिससे कोई फाइट करना नहीं चाह रहा है. Then if Bro, Hamzat see, Chimaev can go ahead, go can. ahead. No, no, go on. You finish first. If Colby Covington can be removed from the rankings, Mm, if Leon Edwards can be removed from the rankings, if mm. Darren Till can be removed from the rankings, Okay. if John Jones can be removed from the rankings, why not Mm-hmm. some fucking guy जो top 5 में है और जो fight नहीं करना चाह रहा? Why Because not? the window of time was very less. That is the reason why. The window of time was very less.
See, John Jones has been inactive for a very long time, almost 3 years now. Kobe Covington, the last time he fought, I can't even remember. Yeah, and Leon Edwards, he got removed because he couldn't get a bloody fight, and when he got himself a fight, COVID came, and then he had to face this problem, that problem, and even when he got the fight, also that fight ended up ended up in a mess. The bloody eye. Hmm. Okay. So चलो कोई नहीं. circumstances play a But lot of play a lot of they have a lot of effect on these kind of situations, man. It's not like, do you think any of these fighters they are afraid of fighting one another? I don't believe that. It's just that there are circumstances which prevent them to do so. Otherwise, Islam has been calling out for like the top five guys for a long time. You saw his किसी को wins. फाइट तो नहीं किया. अगर टॉप 5 में कोई फाइट नहीं कर रहा था, he could have taken Rafael Fiziev, Mateusz Gamrot, Arman Sarukian rematch. Damir, what's the name of the guy? Damir Ismagulov. Yeah, he could have, but did any of those guys call him out? It's Did you red s- panty night. did you It is a did red you panty eh, night for all those guys जिनका ये मैंने नाम लिया. It's a red panty night because उन्हें पता है अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं वो इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट, so then it's a really good show on them. जीते ना जीते बात की बात है. Everyone remembers आरमान सारूकिन. सब जानते हैं आरमान सारूकिन क्योंकि अपने डेब्यू में उन्होंने इस्लाम माखाचेव जो हबीब का प्रोटेजे है, जो अब्दुल मनाफ नुरमागोमेदोव का प्रोटेजे है, उसको अगर आप इतना ले जाते हो, इस तरह से इतना अच्छा टक्कर देते हो, तो यू गेट रिस्पेक्ट, एंड Hmm. दैट टू ऑन योर डेब्यू फाइट. कोई आपको जानता नहीं है. अली अब्दुल Okay. एक ऐसे बंदे को उठा के लाया कि चलो इसका डेब्यू है, हम इसको आराम से मार देंगे. द सेम थिंग Yeah. जो प्राइड के जमाने में होती थी, द सेम थिंग जो नाम नहीं लूंगा प्रमोशन का, बट ये एशियन एमएमए में हो रहा है. किसी Hmm. भी बंदे को उठा ले आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, थाईलैंड से, और फाइट करवा देते हैं. I know which promotion you're talking about. वन चैंपियनशिप का लेवल इसीलिए इतना गिरा हुआ है क्योंकि क्योंकि ये लोग अब आई वोंट नेम नेम्स हियर, बट आप किसी एक अपने मुay थाई चैंपियन की, अपने स्ट्राइकिंग चैंपियन की, उसकी फाइट करा रहे हैं एक अननोन बंदे के साथ जो जिस अफगानिस्तान से है, जिसकी पहली फाइट है, जिसकी डेब्यू फाइट है वन चैंपियनशिप में. हाउ कम? कोई ग्रां प्री स्टाइल भी नहीं है. सो दिस इज द थिंग्स दैट यूएफसी में देखने को नहीं मिलता है, बट स्टिल इस्लाम माखाचेव के साथ ये होता है. इस्लाम माकाचेव के साथ ये ऐसा ऐसा होता है क्योंकि see bro, I've laid down to you the different factors and the different things that were going on and that happened and at that particular point of time when all those fights were being made. Now you use your brain and you think if अरे I'm right or if I'm आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे सुनना ही नहीं है इस्लाम माखाचेव का नाम. fine, आई नीड whatever, man. आई नीड चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस वोल्कानोस्की राइट नाउ. आई होप द चैंपियन पुल्स आउट एंड आई सी ए चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस वोल्कानोस्की फाइट. खत्म. Any more thing that you want to discuss on this main event apart from my bullshit that you have been hearing for about half an hour? I don't know. Let's talk about the fight, the actual fight that is going on, not the probable fights that didn't happen, that didn't take place. What do Sure. you what do you think about this particular fight? I think obviously, thank you for giving the chance first. Uh, Volkanovski, everybody knows stand-up game terrific. Max Holloway, the best boxer in UFC. ये खुद बोल चुके Mm. हैं. Everybody regards him as one of the best, and especially in the जो light weight categories हैं. By lightweight, I mean the lighter weight categories. Featherweight तक, lightweight तक. इतनी बढ़िया बॉक्सिंग किसी की नहीं है. डस्टिन पोरियर और मैग्रेगर के लेवल की आप मान लें इनको. उन उसको 3 बार हराना, द पहली 2 फाइट में भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल थी, बट जो रबर स्टैंप मारा है थर्ड फाइट में इन्होंने 50-44, 50-45, 50-45, दैट इज अनहर्ड ऑफ अगेंस्ट अ चैंपियन सीजन वेटरन लाइक मैक्स हॉलोवे. याइर आई एम सॉरी, नॉट याइर रॉड्रिगेज, ब्रायन ऑर्टेगा को जिस हिसाब से उन्होंने हराया, जिस हिसाब चोक होल्ड से Blood, निकल के आए वो, yeah, माय गुडनेस. man.
उसके This Volk बाद is a different एनाइलेशन, guy. जो कोरियन ज़ॉम्बी का एनाइलेशन किया उन्होंने, माय गॉड! मैं बोल नहीं सकता हूँ He क्या क्या हुआ। from आई pillar थिंक to पिलर टू पोस्ट, डेफिनिटली। तो mm, एक ऐसा बंदा जो इतनी बढ़िया स्ट्राइकिंग लेके आ रहा है, हालाँकि पावर मैं नहीं बोलूँगा कि वोल्कानोव्स्की के पास पावर है, बिकॉज़ ही हैज़ बीन हिटिंग अराउंड 100 शॉट्स, उसके बाद एक नॉकडाउन होता है। वहीं he पे has got precision and technique, गो अहेड। and Volk when Volk uses his hands, he's got precision, technique, and speed. These are the प्रिसिशन three बीट्स really, पावर एंड टाइमिंग बीट्स स्पीड, वन and मिस्टेक मैक्स हैज़ गॉन। got all three. He's got all three. Don't forget that about Volk. 3 Yeah, मीन्स? and he's got precision, power, and speed. All three. पावर Volk आई has वोंट all से, बट ठीक है। that precision, technique, and speed. Sorry. टेक्निक, ओके, ओके, आई कैन बिलीव दैट। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास है एक रेसलिंग मशीन, एक रेसलिंग फिनाम, इस्लाम माखाचेव, विद अ वेरी इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड किक बॉक्सिंग गेम फॉर ए दागिस्तानी। तो एक Yeah. दागिस्तान से उठा के एक लड़के को अगर आप थाईलैंड में रख दो, तो कुछ दिनों बाद जो वो हो जाएगा, वो प्रोडक्ट निकल के हमारे साथ आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इस्लाम माखाचेव। See, नो bro. डाउट, नो डाउट जो पावर, ही हैज गॉट पावर। और मैं Mm. ये नहीं बोलूंगा कि जीरो मुay थाई है या फिर जीरो किक बॉक्सिंग है, वेरी गुड बॉक्सिंग स्किल्स। लेकिन इस्लाम माखाचेव की बॉक्सिंग कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएगी अगेंस्ट द एलीट लाइटवेट्स एंड फेदरवेट्स। लेकिन जो रेसलिंग डोमिनेशन है, जो ग्रैपलिंग डोमिनेशन है, दैट इज अनहर्ड ऑफ, अनपैरेलल। Yeah. बिल्कुल एक तरफा रेसलिंग अगर आप करना चाहोगे तो यू कांट। एंड आई थिंक यही मेरे ख्याल से ये, मैं चाहता नहीं हूँ बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कॉनर मैकग्रेगर और हबीब का एक पार्ट 2 देखने को मिलेगा हमें। मुझे ऐसा लग रहा है। Mm. आई एम डेजा वू होने वाला है मेरे ख्याल से यूएफसी 229 का। Yeah, but the thing आप is क्या that बोलते हो इसमें? the thing is that Volk is not Conor McGregor. Volk is a much more better fighter than Conor McGregor. And let me अपा also add, let me just also add one more thing. Volk, he trains his grappling under Craig Jones, and then his rest and Craig Jones. I think it's Craig Jones. Yeah, he's one of the best BJJ fighters in the world. He's one of the best grapplers in the world, and he's one of those grapplers who have given Gordon Ryan a hard time. So yeah, and he's imparting his knowledge to Alexander Volkanovski. And second of all, Volk is a national championship in he's a national champion in wrestling in Australia. So he knows I believe how to stuff takedowns and to be calm on the ground. And then third, Volk is strong. Imagine he used to play rugby. He used to play rugby and he 214 used to पाउंड्स रग्बी, 93 किलोस। shoulder with those huge guys, man. So I believe if anyone has a fair chance against Makachev, it's Volk. I mean, I don't know what the odds are. I believe Volk is the underdog in this particular fight, but Volk Volk has a much better chance than any other guy I, that I believe who's going to be facing. If it was आई any other, थोड़ा I सा would I would if it was any other fighter in the lightweight division, I'll tell you, I would close my eyes and pick Makachev. Not that I'm writing off all these other guys like Benil. Benil, of course, he's elite, but we don't know. We don't know like what's. I mean, if that fight is ever gonna happen or not. But yeah, Benil also has the skills to beat Makachev, but so does Volk. But and this at this moment of time has the biggest chance to beat Makachev because of because of his striking, because of his experience, and because he's been part of some physical sports that you really need strength to perform. So yeah, that is my argument, man. आपने कहा कि अ, इस्लाम माखाचेव को हराने के लिए, एक दागिस्तानी रेसलर को हराने के लिए सबसे बढ़िया जो प्रोटोटाइप है वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है, बट आई थिंक फेदरवेट में जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। वी कैन स्ट्रेट अवे, लाइटवेट डिवीजन हमारे पास वो लोग हैं जो मेरे ख्याल से अ, Islam हरा market. सकते हैं इस्लाम माखाचेव को।
मेरा भी डेना वाइट मोमेंट हो रहा है ये. एंड 3 बार हुआ है ये मूवमेंट. कंटिन्यू, एंड कंटिन्यू. quoting my favorite fighter, these stupid guys do not have brain cells left. Who is your favorite मैंने fighter? नहीं बोला, quoting my favorite fighter कोल्बी कविंगटन, उन्होंने कहा है कि these guys do not have any brain cells left, क्योंकि they could use their wrestling, but वो wrestling use नहीं करते हैं. It's like saying कोई बॉक्सर है, वो यूएफसी में आ गया, पर वो बॉक्सिंग यूज नहीं करेगा, वो रेसलिंग यूज करेगा. माइकल चैंडलर हैज अ वेरी गुड केस. Yeah. एनसीडब्ल्यू 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 डिवीजन रेसलर, डिवीजन ए रेसलर, Mm. उनसे भी बढ़िया है गेची. बट क्या करें, गेची ऑलरेडी हार चुके हैं हबीब नरमागोमेडोव से, विच आई थिंक हबीब इज ऑन सम अनदर लेवल टू इस्लाम. Mm. इस्लाम ने अभी हबीब का लेवल टच भी नहीं किया है. ही इजंट इवन स्क्रैच दैट लेवल येट, बट होपफुली ही विल. एंड बट आई थिंक एक अच्छा फाइट होगा. एंड बट प्रॉप्स टू इस्लाम माखाचेव, दैट ग्राउंड गेम. इवन I'll tell you. चार्ल्स ओलिवेरा couldn't escape it. चार्ल्स I'll, ओलिवेरा जैसे बढ़िया ग्रैपलर. एंड अगर थोड़ा सा मैं अगर डिटेल में जाऊं, तो मैं एक वीडियो देख रहा था ऑफ दैट होल फाइट बहुत पहले. तो सम आई थिंक हाल फिलहाल में देखा मैंने वो वीडियो. तो द एनालिस्ट वाज सेइंग, एनालिस्ट ये बोल रहा था कि जब वो आर्म ट्रायंगल के लिए गए, तो आर्म ट्रायंगल से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपनी बैक दे दो. दैट Mm. मीन्स रियर नेकेड चोक के लिए तैयार रहो, बट आप आर्म ट्रायंगल मत दो. Yeah. But Islam एंड उसके switched. लिए नहीं, इस्लाम नेवर स्विच्ड. He इस्लाम नहीं. changed position a little bit. नहीं नहीं नहीं, चार्ल्स Yeah. ओलिवेरा ने अपनी पोजीशन स्विच करने की कोशिश की, अपनी बैक Ah, देने की कोशिश की, yeah. लेकिन वो इतना टाइट था वो चोक की. इस्लाम ने इतना तगड़ा चोक डाल रखा था कि ही कुडंट एस्केप. दैट्स द रीजन इतना जल्दी टैप करना पड़ा चार्ल्स ओलिवेरा को. ये पूरा जो एनालिसिस है, इट इज डन बाय कोच साइद. आई एम नॉट श्योर कहाँ पे देखा मैंने, बट कोच साइद जो किल क्लिफ में, ही इज Yeah. अ वेरी No, no, गुड no. कोच. Not Killcliff. It's Fortis. I फोर्टिस watched. एमएमए, ओके, मे बी. बट वेरी, Yeah. मतलब बहुत अच्छा एनालिसिस लगा मुझे. तो मुझे लगा हमें डिस्कस करना चाहिए उस एनालिसिस के बारे में. तो बहुत ही ग्राउंड गेम दैट इज सुपर टॉप नॉच. आई थिंक वेल्टरवेट डिवीजन में जाने के बाद भी ये इनका बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज इवेंचुअली जीतने के बाद वो मूव इन करने वाले हैं वेल्टरवेट डिवीजन में. होपफुली ये ना Even हो not now. अभी में, Even. बट आई थिंक एक डेजावू यूएफसी 229 का देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से, विद अ बेटर गैस टैंक देन कॉनर मैग्रेगर, फॉर श्योर, फॉर श्योर, विद अ बेटर Yeah. गैस टैंक. Better everything. Okay, Nah, fine. no, 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 Connor, no, no, no. Connor has a bus. Connor has power. He has like precision and all. But Volk, Did you okay, see fine. that wrestling? Did you see that wrestling credentials? जो उसमें दिखाए. Kiska. हबीब को अगर किसी ने किसी हबीब की रेसलिंग को आज तक किसी ने रोका है, तो वो दो ही बंदे हैं. एक है ग्लीसन टीबाओ, और एक है Uh, कॉनर मैग्रेगर. बट थर्ड राउंड आते आते वो भी ढल गया था. वो भी ढल गया था थर्ड राउंड आते आते. yeah, because of the gas tank and because of the relentlessness of Hmm. these. And let me tell you one thing, okay, as good as American wrestling is, these Dagestani guys, they are different, man. That You know, sambo style wrestling is. yeah. See, some don't even bring Sambo into it. It's not related. You know, Abdul Rashid Sadulayev, No. he is the best wrestler in the world, and he's from Dagestan. Like the best wrestler in the world. I mean, what was his name? What was his name? Snyderman. Yeah, I watched him wrestle a few times in the World Championships last time when Russia was banned from all these wrestling World Championships. He won. You should have seen his fight. That match against Sadulayev versus Snyder. It was so nice. Snyder I know, but not this guy Sadulov. I think मुझे नाम से याद नहीं है, but by face I'll know him. Definitely do. दोनों के नाम मुझे Sadulayev का नाम मुझे पिंग करना. I'll search for him. But Yeah. uh, any lasting thoughts on this fight? Because fight के बारे में हमने That's it. बात कर ली, क्या होने वाला है. Yeah. बहुत लंबा डिस्कशन हो गया इस्लाम Mm, मखाचेव क्रेडेंशियल्स के ऊपर, डिबेटेबल क्रेडेंशियल्स के ऊपर. डिबेटेबल, दैट्स द वर्ड आई एम यूजिंग. yeah. Any lasting thoughts? Yeah. On Sunday morning, the whoever is betting on this fight, they're gonna be biting their nails, man.
because oh my होपफुली god. होपफुली एक अच्छी फाइट तो हम सब देखने जाते हैं. Coming over to the co-main event for featherweight division, number one contender match, seasoned veteran Josh Emmett Mm, और उनके सामने है the ever exciting one of the flashiest fighter UFC has ever seen, El Pantera, Yair yeah, Rodriguez. I'll tell you. I'll tell you. Looking at this fight now, looking at this fight, I remember one guy, Zabit. He Zabit Magomed could have been here. He could have been here, man. the When fucking I see doctor. any of these top featherweights fight, I miss Zabit so much because the thing is that the only thing that that guy doesn't have is the gas tank. The skills they are unmatched. The- you can hate these guys from Dagestan as much as you want, but you cannot hate Zabit because he's not that kind of fighter. Zabit, Zabit and the other guy from Nurmagomedov clan in Um, like Umar. Umar. That Yeah. guy in Bellator, that shit, man. So That impressive. is Usman. That's Usman. That is Usman, Usman. वही मैं बोल रहा हूँ. Arey, Umar Umar is in UFC only. has yeah. Hmm. But man, props to these guys, man. El Pantera, क्या मतलब इतना flashy skills कभी नहीं देखा Yeah. हमने. I think after Prince Naseem के बाद इतना बढ़िया flashy skills Israel Adesanya and बहुत कम लोग जो दिखाते हैं. And he is one of those guys. So props to him. And कोरियन zombie Chan Sang Jung का fight सबने देखा. आखिरी के 15 सेकंड अगर छोड़ दें तो सब जानते थे कौन जीत रहा है. Yeah. बट दैट वन इन अ मिलियन नॉकआउट, आई थिंक आज तक की सबसे बढ़िया नॉकआउट, उससे बढ़िया नॉकआउट मुझे आज तक देखने को नहीं मिला है. दैट क्रेजी Yeah. नॉकआउट, नेवर नेवर. And गो you एहेड know that टॉमी. he was ducking Zabit as well, right? मे बी हो सकता है, मे बी. I feel like he was ducking Zabit. He even turned off चलो his कोई नहीं, comments. लेट्स लीव Zabit आउट ऑफ द कन्वर्सेशन फॉर अ मिनट एंड लेट्स फोकस ऑन जॉश एमिट. Oh my व्हाट अ God, सीजन्ड Josh Emmett. वेटरन. I've been gunning for this guy to get a title shot for so long, man. So long, and I'm so happy for him that he finally got it, bro. I'm so happy for Josh Emmett, man. सून This टू बी guy, I 38, सून टू बी man, 38. मार्च 4 को he's ये 38 साल के हो जाएंगे. एंड राइट नाउ अगर वो नंबर वन कंटेंडर बनते हैं तो इट वुड बी सोने पे सुहागा है उनके लिए. अर्ली of बर्थडे course, प्रेजेंट. of course. This guy, मतलब this आप इनका करियर brings देखें. up, ही he brings, ही केम फ्रॉम अ 2-2 रिकॉर्ड इन यूएफसी. yeah, दो फाइट जीते, दो फाइट, आई थिंक सॉरी, ही वाज 2-1 इन यूएफसी. yeah, उसके बाद मिर्साद बेक्टिच के साथ इनकी फाइट हुई एंड डैम, एवरीबॉडी नोज क्या उस फाइट का. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मिर्साद बेक्टिच एंड जॉश एमेट फाइट का. mm, He came from hell from that fight after winning, after almost losing the fight, after getting finished multiple times. Shane yeah. Burgos wali fight. Oh, oh my Shane God, Burgos wali fight. it was wild. That was Dan Ige, 50K Dan Ige. Calvin Cater, top of the top, top of the top of this division. And my God, उसके each बाद of भी his आप fight. अगर उस डिवीजन में बने हुए हो, उसके बाद भी अगर आप टॉप 5 टॉप 1 में बने हुए हो तो props to you, man. I can't Yeah. say more. I can't say anything more than this, Donnie. The the only thing that I feel bad for Josh was his injury. Otherwise, this championship shot could have come sooner for Josh Emmett. I'm so happy for him. Honestly speaking, I'm really really happy for Josh Emmett. He's one of the guys who deserves this. Okay, fine. The last fight with Calvin Keita was like some sort of a shady decision, but fuck it, I don't care. I'm glad that Emmett he's now fighting for the interim title shot. And man, I'll tell you one thing. Okay, Josh is a wrestler. You know that, right? Josh Emmett, he's a wrestler, but he loves to bang. And my God, when he comes to fight, that motherfucker, he comes to fight. Sometimes I look at him, he looks like that Shinnok. You know that Shinnok from Mortal Kombat, right? He does without the eyebrows and all that. हाँ, He looks a bit. obviously. जैसे कि मेरे फेवरेट फाइटर कहते हैं, a fighter with no brain cells, Josh Emmett. Sorry in advance. He might not have. I don't give a shit.
but he has इनकी more money than wrestling you and me. Bus. obviously, just hold on a minute. And you wouldn't dare to see that shit in front of him. And मतलब बहुत बढ़िया रेसलिंग है इनकी, बट रेसलिंग का ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते He हैं does. लेकिन ज्यादा नहीं करते हैं. एंड ही लव्स टू बैंग, जैसा कि डॉनी ने कहा. सो I, गो for हेड. this particular fight, I want him to use his wrestling. I mean, डेफिनेटली fine, डेफिनेटली. has to. He has to. Please don't stand for too long in front of Yair. This guy, he's too quick, he's too crafty, and he's too slick, man. Especially like I believe like when it comes to striking wise, Yair is much more skilled than Josh, and he's got power as well, and he uses his limbs really well. I believe if Yair gets a chance, he'll even use his. I mean, whatever can be used as a weapon, man. Whatever part of his body that really Josh has to use his wrestling when it comes to this particular fight. नॉट श्योर Uh, ये एमएमए में क्यों आए. ही शुड हैव बीन इन म्यांमार प्लेइंग लिथुई. yeah, I know. Oh yeah, Yair, yeah, या yeah, ही for शुड हैव sure. बीन प्लेइंग लिथुई, और टॉप प्रोस्पेक्ट इन लिथुई. Mm. लेकिन अगर जॉश हेमेट के बारे में हम बात करें तो रेसलिंग ठीक है, बॉक्सिंग ठीक है, पंचिंग पावर ओके, लेकिन प्रेशर भी इनका बहुत तगड़ा है. कैल्विन केटर को Yeah, इन्होंने जो प्रेस किया था दैट फिफ्थ राउंड फोर्थ राउंड में, दैट वाज Abra. एंड आई थिंक प्रेशर एक बहुत बढ़िया कंपोनेंट है आपके फाइट जीतने में, बहुत हेल्प करता है आपको. अगर आप प्रेशर करते हैं किसी को, अपने ओपोनेंट को, तो आपके फाइट जीतने का चांस बहुत ज्यादा रहता है मेरे हिसाब से. तो Yeah, yeah, इट yeah. इट इज You're right. रियली बहुत ज्यादा चांस आपका बढ़ जाता है अगर आप अपने ओपोनेंट को प्रेस कर रहे हैं उस फाइट के लिए. तो ये वो करते हैं, एंड आई थिंक ये बहुत काम आने वाला है इनको. थोड़ा सा रेसलिंग अगर मिक्स करें इस फाइट में, थोड़ा सा Mm. अपनी बॉक्सिंग, थोड़ा सा रेसलिंग, बिल्कुल अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वाला गेम अगर रखें वो, तो Yeah. बहुत अच्छा काम आ सकता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे एल पेंटेरा गेट्स, थक जाते हैं. एल पेंटेरा इज लाइक अनदर कॉनर मैग्रेगर. तो विद दैट लो गैस टैंक, अगर दो तीन राउंड, पहले दो राउंड अगर निकाल दिए इन्होंने, आई थिंक इट्स Mm. गोइंग टू बी a long night for याइर रोड्रिगेज. लेकिन जैसा कि आपने कहा, याइर रोड्रिगेज, he has got some amazing shit. एंड कोरियन ज़ॉम्बी वाली फाइट हम देख चुके हैं. थोड़ा सा संभल Mm. संभल के खेलना होगा. एंड आई Mm. थिंक ये बहुत ही क्लीशे लाइन हो गई है कि बच बच के खेलना होगा, थोड़ा सा शुड बी कॉशियस एंड ऑल, बट दे ऑलरेडी हैव देयर गेम प्लान, लेट देम एग्जीक्यूट इट. Yeah. हमारे It's gonna, it's gonna be interesting and entertaining as well, man. As this card's main event, it's huge. I can't believe it. The UFC, like even the promotion was like not as good as it, as this card deserves. They're promoting fucking power slap and all that crap. Even today, Dana White also came online on Instagram. He was promoting that fucking power crap shit. I as soon as I saw Dana White is online, Dana, power slap. I had to end it close. And for that thing, I think Islam has the balls to call out the president. For that thing, I'll appreciate the lightweight champion. Yeah, but either way, whatever the result is on Sunday, we're gonna get new interim featherweight champion and new number one pound for pound, and new or and still number one करेक्ट. pound for pound. एंड एक जस्ट एक करेक्शन, हमने याइर रोड्रिगेज के रिकॉर्ड के बारे में बात नहीं की. आई डोंट नो व्हाई दिस गाय इज फाइटिंग फॉर अ चैंपियनशिप राइट नाउ. अगेन दैट इस्लाम माखाचेव केस, थोड़ा सा कम फॉरवर्ड. Okay, why? Why do you think he is? Because Josh, see the sorry, Arnold Allen के एक, he's on a 8 fight win streak, and this guy uh, has lost to Max Holloway, uh, टॉप प्रोस्पेक्ट. दिस गाय हैज लॉस्ट टू फ्रैंकी एडगर, जेरेमी स्टीवंस के साथ इनकी फाइट. चैन सैंग जंग एक फ्लूक विक्ट्री, आई वुड से. ऑनेस्टली, mm, ऑनेस्टली इट वाज अ yeah, फ्लूक विक्ट्री. अगर वो लैंड नहीं करता तो, एंड आई थिंक इस चीज के लिए तो यू हैव टू अग्री विद मी, इट वाज अ फ्लूक विक्ट्री. हालांकि हो सकता है कि अगली फाइट में वो अच्छे प्रिपेयर करके आते हैं, अच्छे से फाइट करते हैं, बट ऑनेस्टली आर्नोल्ड एलन हैड अ मच बेटर रेज्यूमे देन हिम.
Yeah. ब्रायन ऑर्टेगा के साथ विन मिली, दैट वाज आल्सो एन इंजरी. So Mm. I don't think Yair Rodriguez deserve this, but मिल गया है इस्लाम माखाचेव, मिल गया है तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं. Arnold Allen, he's patient, bro. You, you, that guy, he never complains, he never whinges, he never does anything. He gets the fight, he will fight. And I believe that even that fight against Max is going to be a good one. Now that I mean, this is an exciting fight, and I'm looking forward to seeing this fight, you know. 100%. बहुत And exciting and fight है ये. I can agree to that. and and if Yair wins, Mexico gets another champion, Hmm. Right and now they only have Brandon and that Moreno. yeah, and that market over there Maybe grows. Grasso could win. Yeah, nah. As much as I like Grasso, she doesn't stand a chance against that. Maybe, Come on. maybe I said maybe. My favorite fighter has already been Valentina for far too long. Maybe she My can. favorite Maybe. fighter is that. Who Yeah. knows? Tyler Santos almost defeated. I think she defeated. But ठीक है. Ah, Okay, so fine. title fights You के want बाद you want to talk about anything more these you other want to guys? say about title fights? Yeah, I'm looking forward to seeing Jimmy Crute back and Alonso Menifil. Okay, wait. Jimmy Hold Crute, on then. Hold on then. Okay. Jimmy Crute. And टाइटल फाइट्स के बाद हमारे पास वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट है जैक डेला माडेलेना और Yeah, रैंडी ब्राउन के बीच में. एंड सुपर पम्प्ड अप फॉर दिस फाइट. आई थिंक मेन इवेंट कोमेन इवेंट के बाद अगर कोई तीसरी फाइट है जो हमें देखनी चाहिए, दैट शुड बी जैक डेला माडेलेना. रैंडी ब्राउन में नहीं बोलूंगा बिकॉज आई हैवंट mm, सीन मच ऑफ दिस गाय. हे mm, रैंडी ब्राउन 4 फाइट की विन स्ट्रीक पर हैं. गुड mm, फाइट, गुड फाइट फॉर जेकब जैक, yeah, सॉरी, जैक डेला माडोलेना. एंड आई थिंक mm, ये वो बंदा है जो वेल्टरवेट डिवीजन में बहुत आगे, लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत आगे जाने yeah, वाला है. जैक, गाइस रिमेंबर द नेम, yeah. जैक डेला माडोलेना. एंड And he was very active as well last year, Jack. करेक्ट करेक्ट, ही वाज वेरी एक्टिव लास्ट ईयर. 3 फाइट इन्होंने ली लास्ट ईयर, तीनों फाइट जीती. फर्स्ट राउंड सबमिशन, सॉरी फर्स्ट राउंड फिनिशेस. एंड आई थिंक तीनों तीनों सबमिशन कोई था, तीनों के तीनों वाज अ टीकेओ विक्ट्रीज. Yeah, सो आई नो अभी अभी यूएफसी में आए हैं, डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज से निकल के आए हैं. इससे पहले केज वॉरियर्स में ही फाइट कर चुके हैं. तो बल्कि केज वॉरियर्स से बहुत पहले फाइट किया था, उससे पहले आई थिंक सम ऑस्ट्रेलियन प्रमोशन में फाइट कर रहे थे. तो आई एम yeah, रियली पम्प्ड अप फॉर दिस गाय जैक डेला. yeah, आई थिंक जैसा कि मैंने कहा लंबी रेस का घोड़ा, ही कुड गो रियली अहेड. और उनके सामने एक अच्छा फाइटर उन्हें मिला है, रैंडी ब्राउन. जमाइकन रैंडी ब्राउन को अच्छा फाइटर मिला है, हु इज ऑन अ 4 फाइट विन स्ट्रीक. And yeah. 4 fight win streak में I think Chaos Williams is one of them. Who's Yeah. the other guy? Let me see. Trinaldo, Trinaldo, Francisco Trinaldo and Alex and then Cowboy Oliveira, and Worley then Jared. Always. इन सबको ब्रायन बार्बरीना को हरा चुके हैं वो. So he has fought some Yeah, really good guys. Nico Price, Vicente Luque से हार चुके हैं. तो टॉप 10 में घुसने का ये बहुत ही अच्छा मौका है इनके पास. yeah, एंड मुझे बहुत I'm super pumped up for Jack Della. Last year yeah, 3 fights and I hope इस साल भी ये 3 फाइट लेंगे, 3-4 फाइट्स लेंगे. एंड आफ्टर विनिंग ऑल दोस देन प्रोबब्ली yeah. नेक्स्ट ईयर एक टॉप 5 कंटेंडर इन्हें फाइट करेगा. बिकॉज़ Yeah, it looks like last year he's had a very nicely planned out route for him, and even this हाँ, year as well, he's starting at the beginning of the year. at the very beginning, So yes, correct. so if everything goes well for Jack, I believe like I think by the end of the year he'll be in the top 10. What do you reckon? Uh, uh, Go ahead. I said Sorry. if everything goes well for Jack this year, he'll probably be in the top 10 by the end of the year. हाँ, 100%. And guys, just a spoiler alert, don't blink. नॉकडाउन कब Of आएगा यू नेवर नो. यू नेवर नो. yeah, और राउंड 1 में ही आएगा, पहले ही मिनट में आएगा. पहले मिनट में आ जाएगा. पहले because मिनट में आ जाएगा. प्लीज डोंट ब्लिंक. Jack's got hands. जैक्स गॉट हैंड्स मैन. तो एंड रैंडी ब्राउन एक अच्छा ओपोनेंट है, लेकिन स्टिल आई आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी अ वन वे स्ट्रीक. सॉरी रैंडी ब्राउन. एनीथिंग Uh, एल्स ऑन दिस? let's talk about Jimmy Crute if you want to, and Alonso जिमी क्रूड Menifee. लाइट हैवीवेट. आई थिंक प्रीवियसली मिडलवेट डिवीजन में फाइट कर रहे थे जिमी क्रूड, राइट? नो. No, I believe so. He came. He's always been in the light heavyweight division,
And he's been on Uh, a two fight losing run. He lost to Jamal Hill and Anthony Smith. And Alonso Manfield, I believe he's on a three fight winning streak. So yeah, this fight could be make or break for either fighter because Jimmy Crute is a pretty high ranking opponent. And I mean, if Alonso beats Jimmy, it's gonna do well for his career. And if Jimmy wins against Alonso, and he's quite young, Jimmy Crute. I think he's only 26 years old or something like that, 26 or yes. 27. He hasn't even hit his prime. So लेकिन yeah, जिमी क्रूट ने कुछ अच्छे फाइटर्स के साथ फाइट किया हुआ है। करंट चैंपियन जामाहाल हिल के साथ फाइट कर चुके हैं ऑलरेडी। एंथनी स्मिथ, मीशा सरकनॉव एंड mm, सैम आल्वी ऑब्वियसली नॉट अ टॉप 15 फाइटर बट yeah, सॉरी, legend, लेकिन legend. अच्छे फाइटर्स के साथ इन्होंने फाइट किया है। ऑन द ऑपोजिट एंड मीशा सरकनॉव के साथ फाइट किया है एंड उसके अलावा जो फाइटर्स हैं वो उस He, लेवल के नहीं है। he उस beat लेवल के Paul नहीं Craig. है, दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ टॉप 15। नहीं, पॉल क्रेग Mm, उस समय टॉप 15 में नहीं थे 2019 में। mm, सो टॉप 15 फाइटर्स का कभी क्रैक नहीं मिला है अलोंजो मैनीफील्ड को। हालांकि बहुत टाइम से यूएफसी में आई थिंक 10-12 फाइट हो चुके हैं यूएफसी में एंड आई थिंक जिमी क्रूट के लिए अच्छा मौका है अपने आप को mhm, वापस एस्टैब्लिश करने का। ऑब्वियसली ही विल बी अ क्राउड फेवरेट। न्यूज yeah, ऑस्ट्रेलियन गाय, ए लोकल गाय फाइटिंग इन हिज बैकयार्ड। maybe he's not from Perth, not sure of that, but एक अपने देश में खेलना और अगर ये जीत जाते हैं इस फाइट को, इट वुड बी रियली yeah, ऑसम फॉर हिम और मे बी ही कैन कम बैक टू राइट नाउ। आई थिंक अगर नंबर 12 पे हैं वो, तो आगे नंबर 10 नंबर 8 से फाइट करके अपने करियर को दोबारा से टॉप 10 में आ सकते हैं वो। yeah, yeah, yeah. बात करें अलोंजो मैनीफील्ड की, तो ऑलरेडी 2 फाइट विनिंग स्ट्रीक पर हैं और जिमी क्रूट को हराकर एक अच्छा कार्ड पे Mm, अपसेट कर सकते हैं वो। हालांकि ही इज द yeah, फेवरेट गोइंग इनटू द फाइट yeah. एंड द अदर गाय इज अ डॉग राइट नाउ। लेकिन Mm. फिर भी एक होम टाउन फेवरेट को हराना, इट्स ऑलवेज एन अपसेट एंड अनदर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन इट? Nah, I think this is enough, man. Who else is fighting in this card? Tyson Justin Pet. Tafa. Justin Tafa is fighting the great Samoan heritage जो Yeah, यूएफसी में है, मिक्स मार्शल आर्ट्स में है, right from the super Samoan, Mark Hunt, Justin Tafa, Junior Tafa, and Juan Adams. All these guys, sorry, not Juan Adams. All these ah, guys, Justin Tafa, Junior Tafa, they are one सब bangers के लिए आते हैं. They all mm, have super chin. How can these I some forget Tai Tuivasa, man? Shit. How can I forget Tai Tuivasa? All these guys, man. These guys are super, super, super good chin इनके पास है. So I think एक अच्छा फाइट देखने को मिल सकता है हमें ये वाला भी. We should watch out for junior Justin Tafa. yeah. Justin Tafa. There's two fights that I was gutted. I mean, which got cancelled. That Joel Alvarez versus Zubaira, and then Robert Whitaker versus Paulo Costa. Cheh. This fight card would have even better अब with मुझे नहीं लगता ये फाइट होने वाली थी बिकॉज यूसाडा यूसाडा ये फाइट को रोक देती है आई बिलीव। why. क्योंकि रॉबर्ट विटेकर इज ऑल बीन क्लियर बट जो सीक्रेट जूस लेके आते हैं, See, come secret on. juice could have been caught by USADA. That's the reason he pulled out. That's the reason he pulled out of the fight. You can't be on a fucking juice and fight in UFC, man. USADA will catch you. USADA will catch you. Talking like an absolute ignorant person right now. दिमाग खराब हो गया है. Please let's move on to the next segment, man. Before you talk some more shit and I lose my mind. Uh, अरे यार क्या हो गया यार? I'm trying to be a jerk, bro. Chill. एंड गाइज ये पूरा जो UFC 284 का कार्ड है उसके बारे में अभी हमने बात किया। थोड़ा सा अगर प्रीलिम्स में अगर हम जाएं, टाइसन पेड्रो, अनदर समोअन फाइटर। टाइसन पेड्रो इज फाइटिंग of yeah, Samoan heritage. He's yeah. fighting. Modestus Bukauskas. Thank you, Modestus Bukauskas. Yeah. Sorry for the butchering his name, but again,
लाइट हेवीवेट डिवीजन में ये फाइट होने वाली है। टाइसन पेड्रो इंजरी के बाद आ रहे हैं, बहुत लंबी इंजरी के बाद आ रहे हैं। आई थिंक लास्ट ईयर जो इनकी हैरी हंसकर के साथ फाइट हुई थी, उसमें भी वो इंजर्ड गए थे। तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने के बाद ये फाइट हो रही है, एंड आई होप फुली रिकवर हो गए हो इस फाइट में, एंड विल सी अ गुड वर्जन ऑफ टाइसन पेड्रो, जो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था जब वो यूएफसी में डेब्यू हुए थे। As far as Muribi is concerned, he मॉडेस्टस। Modestus, yeah. So, man, this guy got kicked out of the UFC because kept on losing. You know, he was on a losing run, and then he went back to Cage Warriors, and now he piled a couple of wins over there, like a few wins here and there, few fights. Now he's back. So Tyson Pedro is no joke. Yeah, sure, he was laid off because of injury, but man, this is gonna be a very, very good fight, and I'm glad that you know it's the main event of the prelims. So I'm gonna be watching this. Are you gonna be watching this? Maybe, maybe not, but one guy I will not miss is Shane Young. Ah, And I think every one of you guys, UFC 257 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था, if I am not wrong, शेन यंग ने UFC 257 में अपना डेब्यू किया था। और जो उन्होंने द एंटिक्स दैट ही पुल्ड, जो एंटिक्स उन्होंने पुल किए थे उस फाइट कार्ड में, दैट वाज डेना व्हाइट की फट गई थी ऑनेस्टली। जो हाका इन्होंने किया था ऑन स्टेज, एंड गाइस अगर आप हाका नहीं जानते तो हाका जो रग्बी है, रग्बी मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम करती है, ऑल ब्लैक्स एज दे आर नोन। yeah, तो it's an Islander war dance नो, इट्स नॉट एन आइलैंडर डांस, इट्स अ माओरी डांस। माओरी समोअन हेरिटेज को ये लोग वो करते हैं। सो because हाका हर all हर the मैच से पहले करते हैं, जस्ट टू फ्राइटन योर ओपोनेंट। एंड शेन यंग की फाइट में जरूर देखना था, बिकॉज ऑनेस्टली एक दो टू फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर है, मेक और ब्रेक टाइम है शेन यंग के लिए। फाइट जीतते again. हैं तो ठीक, नहीं जीतते हैं तो नॉट आई होप, आई एम सॉरी फॉर द चॉइस ऑफ वर्ड्स, बट मोस्ट प्रोबेबली ही विल गेट कट फ्रॉम यूएफसी। Yeah, लेकिन and this, शेन यंग always a he's Shane Young is like a what you say, the goat of MMA. Shane Young is like the goat of MMA. कौन है? Who is the goat of MMA? Oh yes, Artem Lobov. He might lose fight, but he'll give you some bangers in between. He'll give you some bangers in between. good luck waking up at on Sunday morning at 4:30 a.m. Okay, बाद have में भी good luck. देख सकते हैं फाइट, बाद में भी देख सकते हैं फाइट। ऐसा कुछ नहीं कि आपको पहले ही देखना है फाइट। ओके, लेकिन लेकिन ऑनेस्टली शेन यंग की फाइट आप जरूर देखिए, इट विल बी अ बैंगर। चाहे वो जीते चाहे हारे, चाहे वो 1 मिनट की फाइट हो और वो उसमें हारे हो, लेकिन वो हाथ घुमा के, हाथ छोड़ के जाएंगे, वो खाली नहीं Yeah, जाते हैं। sure. तो All now I think it's time that we move on to the next segment, and please, एंड वन थिंग, जुबेरा टुकागोव फाइट नहीं कर रहे हैं आपने कहा था, but he is yeah, still fighting on this card on the early prelims, the first fight of this card. That's how these dominance guys should be, at the bottom of the card, at the bottom of the card. don't even want to J- say anything just anymore, man. kidding, just kidding. And गाइस ये पूरा UFC 284 का कार्ड था, होपफुली अच्छा कार्ड हमें देखने को मिलेगा।